Okay, so welcome back once again in the show, the Aakash Bhabad Success Show. And आज हम एक थीम के साथ जुड़े हैं, द ऑथर्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी. So इस सीजन में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स की जर्नी के बारे में जानने वाले, उनके एक्सपीरियंसेस को समझने वाले हैं. उन्होंने किस तरीके से अपने बुक को लिखा, क्या उनका एक्सपीरियंस था, क्या लोगों को वो देना चाहते थे. तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हम समझेंगे और किस तरीके से हम भी एक सक्सेसफुल ऑथर बन सकते हैं, तो वो भी हम उनसे जानने वाले हैं. सो आज हमारे साथ एक और गेस्ट है, डॉक्टर शुभा मुखर्जी मैम. शी इज एजुकेटर, ऑथर, को ऑथर, lots of achievements she has. She is a part of world record also. So उनको उनके बारे में हम और जानते हैं. सो आई वुड लाइक टू इनवाइट आवर ऑनरेबल गेस्ट मिस डॉक्टर शुभा मुखर्जी मैम. वेलकम मैम on this wonderful platform. Thank you so much, Aakash ji. Thank you for inviting me. And it is nice to know about you, to associate with you. It's always Yeah, been my thank pleasure. सो मैम, मैं इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ही आपको ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज आप अपने बारे में इंट्रोड्यूस कीजिए. हमारे बाकी जो व्यूवर्स है उनको आपके बारे में पता चले, डीपली पता चले, इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करना इनवाइट करता हूँ, प्लीज. But thank you so much for giving me this opportunity. As Aakash has said, my name is Dr. Shubha. I'm an educator teaching senior secondary classes. And when I came into association with Mr. Aakash, then he just developed a desire in me to write a book. He made me so passionate about one program, that event that he organized. I attended that event where he invited various people from various fields. There were various authors. There were book launch took place, and where they expressed themselves, where they spoke that how they have opened their heart to the readers, and that inspired me so much that I also decided to continue my association with Mr. Baba, that I can get a chance to publish my book. Other than writing, I conduct webinars also for educators to help them and guide them. That is that's another passion. I'm quite passionate about that also. And not only just writing books, as well as I love to sketch and take part in different competitions that they are organizing, because life should have challenge. Otherwise, it becomes very stagnant. This is what I feel. Right? Thank you, Akashi. Yes, thank you ma'am. And it was a really awesome event. आप जब आए थे दिल्ली से और डिफरेंट डिफरेंट जगह से जब लोग आते हैं तो एक ऑर्गेनाइजर का भी एक अलग एनर्जी होता है. सो इट गिव्स मोर मोटिवेशन. सो जैसे आपने रिसेंटली बात की आपकी बुक की, तो बुक से ही शुरुआत करते हैं जर्नी की. रिसेंटली आपने बुक लिखा है, तो क्या एग्जैक्टली exactly आप बुक से लोगों को देना चाहते हैं, किस रिलेटेड है, थोड़ा डीपली आप बताइए. और उसका जर्नी कैसा था, मतलब क्या एक थॉट था आपके माइंड में और उसको अपने लोगों के सामने वो चीज रखा. See, I gave that name kaleidoscope. Kaleidoscope means, if you look at, there are various angles which have been presented in that book. Yeah. Human life is not like a straight line. There's ups and downs a person goes through in one's life. Similarly, Yes. we all experienced COVID. During COVID, we all have seen certain good things happening, certain not so good. So or rather say, I learned a lesson from that. During that period, I lost many people. That broke me down completely. And it was so overwhelming that I could not hold it further. And from there, my writing journey started, because I wanted to express it with the help of pen and paper. And I went on writing. Once I took that pen, and I just did not stop until unless I wrote a good number of pages, I must say. So in that kaleidoscope, what I would like to tell is that it's all about emotions, feelings a human being goes through. In one's life, there are so many things that are happening.
So instead of holding them to oneself, it is always better to share. When you share it, you feel lighter, as well as people also come to know about you more and more. So that is all. With that, I started my journey, and I hope to continue with it. If Akash ji helps me, definitely the sky is the limit. Yes, definitely, ma'am. It was a very awesome book. मैं personally भी कुछ poems पढ़ पाया था और जिस तरीके से ये जो वर्ड है तो थोड़ा वर्ड को आप एक्सप्लेन करेंगे मतलब एग्जैक्टली वो नाम में क्या मतलब ये कैसे माइंड में आया आपका कि उन क्योंकि मैं हम लोग जब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं तो हमेशा ये चीज लोगों को बताते हैं कि नाम अपना बहुत अच्छा होना चाहिए शॉर्ट स्वीट एंड कुछ अट्रैक्टिव होना चाहिए तो जो बुक का नाम आपने रखा है एक डिफरेंट कुछ मैसेज देता है शायद मुझे ऐसा लगता है तो आप उसको ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते Definitely, it gives you the idea that what you are going to read in that book. See, we have different emotions. In a person holds different emotions. Sometimes you are in the sad mood. Sometimes you are very happy, excited, elated. So, similarly, kaleidoscope also. When you that instrument, when you roll, you will find the different color taking different shape, right? Similarly, when a person goes through different phases of one's life, different poetry comes out. That is what I feel. That you this is like poems, different poem, different with different flavor. I have presented it. Sometimes I am very, very sulking mood. So different kind of poem came out when I was very happy, very excited. The poem was entirely different. So when in one book I am putting so many emotions for the readers to read. So I thought, why should I not call it kaleidoscope? Because in kaleidoscope also, you see different colors, different shapes, different designs, right? Similarly, when you will read this book, when you will go when each and every poem, you will find that how you are into the journey through various emotions, through various feelings that one हैं experiences. It gives you an idea that how different moods, different you can say your emotions could be expressed in through words. That is what I try to express through this poem Kaleidoscope. super super it's a combo of emotions feelings and different shades so I personally request to our viewers जब भी वो लोग देखेंगे वीडियो को एक बार आप अमेजोन पे जाके उनका बुक सर्च कर सकते हैं आई पर्सनली से कि आप बुक ऑर्डर कीजिए जहाँ से आपको डिफरेंट डिफरेंट इमोशन का एक कॉम्बो बुक पोएम्स के थ्रू आपको मिल सकता है तो ये तो हो गया मैम बुक की जर्नी जो आपने शेयर किया पर एक और चीज मैं हमेशा सीखता हूँ आपसे या बहुत सारे लोग जो एसोसिएट है एबीसीडी के साथ आप एजुकेशन फील्ड में है एज एजुकेटर आपका जर्नी कैसा रहा अब क्योंकि इतना एक्सपीरियंस आपके पास है बहुत सारे स्टूडेंट्स को आपने गाइड किया है उनके लाइफ में कंट्रीब्यूशन एक एजुकेटर का बहुत इम्पोर्टेंट होता है तो किस तरीके से अब तक का जर्नी रहा आपका और आप कैसे देखते हो उसे I will call it awesome. Such wonderful experience या I had. I would not have got be any other profession. I am really, really very passionate about being a teacher. Every day when I go to school, I become a new person because it comes with so many challenges. Every year, so many students are passing out, so many students are coming. Their needs, their requirements, their intellectual levels are always different. And they keep on posing different challenges on you. And when you're encountering those challenges, when you're resolving those challenges, it is always a keep when a learning for us. So I am learning on yes a daily basis. There is so much to learn with these youngsters that we are dealing with, that I don't think that any other job is that challenging, that full of knowledge. I don't see any yes other profession. I love this profession really.
I love to be a teacher. Superb, superb. Yes. So really amazing. मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ एज एजुकेशन प्लीज शेयर कीजिए ऐसे हैबिट्स और क्वालिटीज होते हैं जो एज एक एजुकेटर के लिए इम्पोर्टेंट है एक अच्छे एजुकेटर के लिए वो हैबिट्स और क्वालिटीज बहुत हेल्पफुल हो सकती See, an educator need to be very committed to job, and there is a no limitation that you can explore. You cannot explore. There are 101 thing that you can explore. That are 101 thing that you can try out. You can learn. So you need to be very passionate about your job. You need to be very committed, hardworking. There is no other way than this. What I feel, until unless you are committed, you cannot give your best. Because when parents send their children with the faith that you will give them knowledge, you will make them a better human being, and to fail in that, I think it is a failure of a teacher if they are not able to do so. So I believe that we need to be completely committed, dedicated, devoted to our job. And until unless you are passionate about teaching, please don't take it up. That is my advice, because we cannot play with so many है यस lives, right? Parents' faith, belief with which they are sending their children to us, they are like small, यस fresh flowers, I must say. And it is in the hand of the teacher that यस whether they will let them bloom further or let them sink and dry. So be passionate सुपर about सुपर whatever you do. Yes. यस डेफिनेटली एंड पैशन इज वेरी इम्पोर्टेंट जैसे मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ यहाँ पे मैं ये चीज क्योंकि लास्ट मैंने ये खुद से एक्सपीरियंस किया है 3-4 महीने डिफरेंट डिफरेंट चीजें मैं कर रहा था एक साथ में और वो डेडिकेशन शायद मेरे इनसे हो नहीं रहता शायद ये हो सकता है कि मल्टीपल चीजें एक साथ आई तो मैं मैनेज नहीं कर पाया पर एक बार मैंने मेरे एक मेंटी है और उनको मैं ये बात बता रहा था कि आपको ये चीजें करनी है और वो एकदम समझदार जैसे एकदम समझ लेते थे जब डिस्कशन होता था और एंड में फिर उनसे रिजल्ट नहीं आता था 3-4 दिन बाद सेम चीज कि उनको वापस बताना पड़ता था कि यार आपको ये करना है ये होगा वो समझते थे फिर वापस वही होता था तो फिर लगा कि नहीं नहीं ये तो उनके साथ हो रहा है शायद अपने साथ भी हो रहा है तो ये गड़बड़ अपने अंदर है पहले ये ठीक करना पड़ेगा फिर वापस से प्लान किया बैठा ये जो डेडिकेशन वाला चीज है ना तो वो क्योंकि वो प्लानिंग से भी आता है और जिस दिन हम पैशनेट होते हैं तो ऑफ कोर्स डेडिकेशन पे काम होगा ही अगर कई प्रॉब्लम आते हैं तो उस पे और काम हो सकता है और उसको फिर स्ट्रक्चराइज बनाया वापस से खुद पे वो काम किया वापस से स्ट्रक्चराइज बना रहे तो इट्स रियली अमेजिंग और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है जो आप लोग कर रहे हैं एजुकेटर एज एजुकेटर ये सेकंड पेरेंट्स होते हैं बच्चों के तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और ऑफ कोर्स मैं एक क्वेश्चन भी पूछना चाहूंगा क्योंकि ये जो जर्नी है ना टीचिंग का लोगों के जीवन में हम इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं तो कोई ऐसा एक वाव मोमेंट आप शेयर कर सकते हैं कि आप ये अब तक का जो आपका जर्नी रहा है तो किसी मतलब आपके जो स्टूडेंट्स है आपको लगा कि हाँ कोई ऐसा इंसिडेंट कि ये मेरे लिए वाव मोमेंट था कि ये जो जॉब है ये करते करते मुझे मतलब वो पूरा सेटिस्फैक्शन हम लोग बोलते हैं कि वो मिला तो ऐसा कोई एक आधा एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हैं Actually, my life is full of wow moments. Full of wow moments. ये And let me tell you, on Mother's Day, suddenly I received, though हाँ हाँ naturally my daughters, they always wish me, but I हाँ हाँ received so many messages from my students on Mother's Day telling, ma'am, यस our mothers are there at home. You're also like my mother. You understood my यस problems, my feelings, and you were always there to help and support us. We kept on bothering you with our problems, but you never gave up. So when you receive such kind of सुपर messages from your students on Mother's Day, naturally it brought tears to my eyes. But I was यस so यस overwhelmed that yes, I can say that somewhere
I achieved success. Even yesterday also I super. received a message from my one of my students. He Uh, shared his screenshot of his notebook where I had checked and have uh, given him compliment and I have signed. And he shared he is mhm, in doing graduation final year. So he shared with that, super. said, "Ma'am, I was just going through. Suddenly, I came across this notebook where you checked and you signed Yes. and you just given star at class 12th also. And I really missed you, ma'am. Love you a lot." So when you receive such kind of messages from Yes. your passed out students, Yes. I can't explain. I can't explain the manner in which we teachers feel. These are the Super. wow Super. moments of our life, and this is, I think, uh, keeps us alive and get going. Yes. Right? Every morning we get up and go to school Yes. to meet all these lovely smiling faces and to Yes. collect some more wow moments. सुपर सुपर इट्स रियली अमेजिंग। जब ऐसी चीजें होती है तो ऑटोमेटिकली वो एनर्जी मोटिवेशन इंस्पिरेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है और वही और ज्यादा कंट्रीब्यूट करने की एक प्रेरणा देता है। रियली अमेजिंग। एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप हर एक का कुछ विजन होता है कुछ मिशन होता है तो आपका विजन मिशन क्या At present, my vision, if you talk about, I am working on multiple things. On multiple things, like you can say that writing, I'm very passionate about. I want to take it है? further. I want to write more and more. But my mission and vision is to touch more lives. यस। After retiring, I would say that I want to take up, if I'm not able to join NGOs, I would like to start a small school for those students who do not have the privilege to go to school. Basically, I want to start a small evening classes or some evenings school time for these underprivileged children, children of my area. I feel that they are just spending their time. They have no one to guide them, to teach them. If यस। I can just help them to learn to read and write, I think my life will be successful. Though my dreams and visions are not very big, it is pretty small, but at least uh, I make this promise to myself that whatever I have learned, it should be utilized uh, in a worthwhile uh, activity. At least I should take up something which is worthwhile, which is at least beneficial for the society, along with my यस। writing practice. सुपर। आप बोल रहे हैं कि वो छोटा है बट नहीं इट्स कंट्रीब्यूशन कभी भी छोटा नहीं हो सकता ऐसा मुझे लगता है मैम। एंड रियली रियली अमेजिंग ऐसा सोचना भी कितनी बड़ी बात है और आप वो करने वाले हैं डेफिनेटली। और आप अभी भी कर रहे हैं इतने सालों से वो कर रहे हैं इट्स रियली अमेजिंग। और एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बुक राइटिंग के रिलेटेड ही। आपका जो जर्नी था तो क्या ऐसे आपको प्रॉब्लम्स आई थी क्या ऐसे हर्डल्स है और जिसको आपने ओवरकम करके वो बुक को कंप्लीट किया क्योंकि ये जो चीजें है ना बहुत सारे लोग क्या होता है कि उनको बुक लिखना होता है पर या तो पहले वो सोचते हैं कि उनको टॉपिक फाइनल करने में दिक्कत आती है वहां से शुरुआत होती है तो एंड में वो पब्लिशिंग ब्रांडिंग तक जाती है। तो ऐसे क्या हर एक को प्रॉब्लम्स आते हैं ऑफ कोर्स और जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसको हम ओवरकम करके जब सब चीजें करते हैं तो वो हमारे लिए एक अलग सक्सेस स्टोरी होती है। तो आपके लिए क्या प्रॉब्लम्स है और उसको कैसे आपने ओवरकम किया? Okay, I will be very frank with it, Akashi. Basically, time was the biggest constraint for me because to take Yes. out time to write down, it was the biggest constraint. But being a language Mhm. teacher, writing was not a difficult thing for me to find a title also. But to get a good publisher like you was a blessing for me because once I was Thank able to write it, complete it, then I was looking for a publisher. I was just looking for someone who can publish. And I must confess this thing that once I handed over my content you. to Akashji, to ABCD, I had nothing to worry Yeah. about.
everything from yes, designing to cover to finalization to everything. See, a writer, mm, you will find that there are plenty number of people who can write well, right? But yes, many of them, they are not able to publish their work because they are not getting kind of help that I got. So yes, I think that I was very, very lucky that way, that once I finished my collection of poems, I just got mm, so much help from Akashi and his team that they contacted me. They asked for the content. I shared it with them. Then designing and deciding about the font size and everything was done by them, by marketing and everything. I must mm, say, whatever the process is, even I don't know the process. It was taken care by yes, Akashi and his team so very well that I have never had yes. to look at it anything. Only thing that I should continue writing. Rest I leave on Akashji and his team to take care. So that Yes, way I was really lucky and I was really blessed. सुपर। थैंक यू मैम। ऑफ कोर्स टाइम का इशू हर एक को आता है, टाइम को, और इसीलिए एक मेंटर, एक सिस्टम होना इम्पोर्टेंट होता है। तो और जिस तरीके से आपने बताया, तो मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ और चीजें शेयर करना चाहता हूँ। कोई आपका जो बुक राइटिंग का था, ऑफ कोर्स आपने वो पूरा लिख लिया था, कंप्लीट कर लिया था, और आगे की जो चीजें थी बहुत आसान थी हमारे लिए भी। जैसे हमारा इवेंट में डिस्कशन हुआ था, मेरे ख्याल से हम तब बात कर रहे थे, आपने बताया था कि हाँ हम बुक लॉन्च, बुक पब्लिश करने करेंगे, और फिर उसके बाद दिवाली के आसपास हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसी टाइम पे आपने मुझे शेयर किया था मैन्युस्क्रिप्ट, और फिर वो जो जर्नी था इजीली कंप्लीट हुआ। तो इट वाज ऑसम। बहुत सारी चीजें उसमें होती है। और बुक राइटिंग एक एक जब हम उसको लॉन्च करते हैं, बुक जब मार्केट में आता है, एक अलग फील होता है। तो ये जर्नीज काफी मेमोरेबल भी रहती है। तो एक एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे हम अ, हर एक के लिए सक्सेस अलग अलग होता है। तो मेरे लिए कुछ चीज अचीव करना सक्सेस हो सकता है, सेटिस्फैक्शन सक्सेस हो सकता है, कुछ डिफरेंट डिफरेंट गोल्स मेरे लिए सक्सेस हो सकते हैं, और सक्सेस एक लंबी जर्नी भी है। तो कोई एक डेस्टिनेशन तो है नहीं। तो आपका आपका क्या ओपिनियन है अबाउट सक्सेस? First of all, Akashi, I would like to tell you that how I felt when my book was launched. See, the thing is that this I wanted to do from a long time. When I was a student from that time, you can very well understand from a long time how many years must have gone behind when I wanted to publish my book. And it would not have turned into reality if I haven't met you. Right, meeting you was a real blessing. That is why I call it, because it is a long-lived dream that I could materialize through ABCD publication, right? One thing, and holding my book and standing in front and talking about it, uh, it was such a proud moment for me, which is beyond words. I can only feel, and if you can understand from my words, that is completely up to you. But to explain that moment, it's really beyond expression. And my success, if you're talking about Akashi, definitely I will. I know that sky is the limit. I'm very passionate about writing, and I keep on writing, and I will keep on publishing my books. And my readers will definitely get many copies, many you can say topics to read in future. Like at present, as a teacher and educator, I'm little busy, and whenever I get time, I keep on writing. As being a passionate author and a poet, I will never stop writing. As and the thing is that success depends upon my readers. How much they want Yes, to make me successful, it is entirely up to them. I have got my publisher to help me out, and rest my success depends on my readers, how they appreciate my book, how they love, how they read, and I am always open to their feedback that is going to be beneficial for me, that I can bring that kind of improvement in my next
book that I will be writing. Thank you so much. सुपर सुपर, थैंक यू मैम। एक और क्वेश्चन पूछने से पहले मैं एक चीज शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं जब भी आपने देखा होगा शायद लास्ट ईयर से भी हम लोग ये कर रहे हैं, और जब भी इंटरव्यू करते हैं तो एक पर्सनल क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं, सभी को पूछते हैं, और उसका मतलब उसके पीछे का जो रीजन है वो उसके बाद में बताते हैं, और एक ही वर्ड में उसका आंसर आपको देना होता है। तो ये क्वेश्चन ये है कि आपको आपका ये जो जर्नी था अब तक का, और बुक राइटिंग का भी, तो इसमें Akashi, I could not hear. I think for a time being, the connectivity was very weak. ओके, I could not hear. Can अभी you repeat? अभी आवाज आ रही, It नाउ ऑडिबल? it is reaching, but the thing is that your voice is cracking a हेलो, lot. नाउ ऑडिबल मैम? Yeah. Yes, please. ओके, नाउ ऑडिबल? Yes, Akash, जस्ट please. आई थिंक नाउ ऑडिबल। See, in between it is that तो network मैं is. कुछ, बताइए. हाँ हाँ, maybe। तो क्वेश्चन ये था कि आपका जो अब तक का जर्नी रहा या बुक राइटिंग का जो जर्नी है, तो इसमें सबसे ज्यादा सपोर्ट आपको किसने किया, और फैमिली मेंबर्स में से आपको किसी का नाम बताना है? Family members say, I would say that my husband, he was Sorry? all very cooperative. ओके। He was very cooperative and supportive. He always stood by my side. And हाँ हाँ, along with that, you said one name. Otherwise, I want to add my daughter's name also because it was they who suggested the name of the book. सुपर सुपर। तो ये क्वेश्चन पूछने का रीजन ये था कि बहुत सारे गेस्ट जब आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सबको अप्रिशिएट करते हैं, और कभी कभी हम अपने बहुत क्लोज लोग होते हैं उनको हम अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म में ये क्वेश्चन पूछने का रीजन ये था कि हमारे अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको हम पब्लिकली अप्रिशिएट करें, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। सो थैंक यू मैम वंस अगेन। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एज एजुकेटर आपने इतना कंट्रीब्यूट किया है, इतना एक्सपीरियंस है आपका, आप ऑथर है, एजुकेशन में आपने इतना कुछ कंट्रीब्यूशन किया है, तो एक और चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि जो एजुकेटर्स है जो न्यू ज्वाइन करेंगे या उस फील्ड में आ रहे हैं, एजुकेशन फील्ड में आ रहे हैं, या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टीचर्स है, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है ताकि उनके लाइफ में, उनके करियर में कुछ कंट्रीब्यूशन हो, तो उनके लिए जो मैसेज? Akashi, I just want to say that remain humble, remain humble, remain hungry. Always look for something to learn. Until unless you are humble, it is very difficult to learn. And learning never comes to an end. If I am overconfident, if I think that I know everything, then and there your learning stops. So it's an entire life you need to remain humble because there is something or other to learn from everyone. Even from our students also we learn on a daily basis. So if we are not humble, we cannot learn. To think that I know everything because I am a teacher, I think it is wrong. So to the existing teacher and to the new joinees, I will always like to say that be humble and always look for an opportunity to learn and never say no to learning. Because when you are given with responsibility, it is an opportunity given to you to learn. To take up responsibility is very necessary that way. सुपर सुपर। और ये हम्बलनेस लाइफ में रहना कितना इम्पोर्टेंट भी है,
और जिस दिन हम हम्बल नहीं रहते हैं, प्रॉब्लम शुरू होते हैं, और जिस दिन हम हम्बल होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स इलिमिनेट होते हैं। मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया है, एंड इट्स रियली अमेजिंग क्वालिटी जिसके अंदर ये है। मैं मानता हूँ कि ये क्वालिटी है, हम्बलनेस एक क्वालिटी है, और वो हमेशा रहनी चाहिए। और तभी बहुत सारे लोग कनेक्ट होते हैं अपने साथ, तभी बहुत सारे लोग लॉन्ग टर्म के लिए रहते हैं, और सक्सेस को हम इजीली अचीव कर सकते हैं। सो थैंक यू वंस अगेन मैम फॉर द वंडरफुल शेयरिंग्स। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ये सीरीज को हम कंटिन्यू करने वाले, डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स को यहाँ पे इनवाइट करेंगे, उनके लाइफ के बारे में, उनका जो बुक राइटिंग जर्नी है उसके बारे में जानने वाले, और वहां से सीख के हमेशा मैं बोलता हूँ कि हमें वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जिस दिन हम इम्प्लीमेंट करेंगे ना वो चीजें, तो हम भी थोड़ा और अपग्रेड होने की ज्यादा चांसेस है। तो कोशिश वही करेंगे। और थैंक यू वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग। Thank you, Akashi. Give me a chance to say few words about you also. And I have never come across a person like you who is so humble, so encouraging, and I must say, such hardworking, dedicated person I have seen. I have learned so much from you थैंक also, so much from you. That when you came for the event in Delhi, how you maintain your कहते हैं, composure, you did not get panicked by the situation. I was just observing you, and with your gestures, I have learnt a lot. Thank you so much for teaching me so much. Thank you for being my थैंक teacher. यू मैम। यस।